going to discuss one mini project related to Python. Okay, so this mini project basically deals about data set जिसमें लाइक डिफरेंट डिफरेंट मूवी के रिव्यूज हैं. डिफरेंट डिफरेंट मूवीज के रिव्यूज है और आपको यू ऑलरेडी नो दैट IMDb जो होता है ये व्हाट IMDb यूज्ड टू डू इट यूज्ड टू गिव रेटिंग. It is used to give rating for the movie according to their plot, according to story, according to what people have given their opinion. ठीक है. तो ये डेटा सेट इज ऑल अबाउट मूवीज रिव्यूज. ओके, ये एक मिनी प्रोजेक्ट है. जब आप लाइक यू आर फ्रॉम नाउ यू हैव ओनली स्टार्टेड फ्रॉम पाइथन ओनली नो. जब आप पाइथन पढ़ लोगे, पावर बीआई पढ़ लोगे, SQL, and these three things you will read, no? Then we will be doing one major project. Okay, so we will be connecting what? Python, SQL, and Power BI all together to carry out the major project. Okay, तो हम लोग basically क्या सिर्फ Python की project देख रहे हैं with respect to whatever the libraries that we have used up to now. So NumPy, Pandas, Matplotlib, and Seaborn. So with the help of these libraries, we will be seeing what we can do with respect to these projects. Okay, तो ये basically हम लोगों ने कुछ पहले कर लिया है. There will be some new things that you will be learning. Okay, तो हम लोगों ने क्या किया? As usual, we have imported some libraries: NumPy, Pandas, Seaborn, and Matplotlib. Okay, and after that, we have imported some data set, that is IMDb movie data set. Okay, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया इसको? उसके बाद we wanted to see top 10 rows. So what we have done, data dot head, and इसमें हम लोगों ने क्या रख दिया? 10 रख दिया, 10 रख दिया. So we have seen that top 10 with respect to that data. इस डेटा के बेसिस पे टॉप 10 मूवी आपको दिख रहे हैं. ओके, विथ रिस्पेक्ट टू दैट. ओके, एंड आफ्टर दैट लास्ट 10 रोज यू ऑलरेडी नो किस तरीके से हम लोग चेक करते हैं. टॉप 10 रोज, लास्ट 10 रोज यू ऑलरेडी नो. सो df डॉट डेटा डॉट टेल. सो लास्ट 10 ये हम लोगों ने कंसीडर किया. ओके, now after that what we are finding the shape of our data set. We have already done these things. Okay, but इसको एक proper project की तरीके से हम लोग करने जा रहे हैं. So for finding the shape of our data set, we will be using what? Data.shape. So it will represent what? 1000 rows and 12 column. ठीक है. अगर आपको इसको अलग से रिप्रेजेंट करना है, डेटा डॉट सेव 0 अगर आप लिखोगे तो ये 1000 दे देगा, और 1 अगर आप लिखोगे तो 12 देगा. ठीक है. आफ्टर दैट व्हाट वी आर डूइंग, वी विल बी गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट आवर डेटा सेट. ठीक है, क्या डेटा सेट में इंफॉर्मेशन है, किस तरीके से क्या कर रहे हैं, लाइक डेटा टाइप क्या है, आपके नल वैल्यूज है कि नहीं है, दैट वी पीपल आर गोइंग टू फाइंड. सो व्हाट वी हैव डन, डेटा डॉट इन्फो. ओके, सो इन्फो हम लोगों ने किया. सो दीज आर द pandas लाइब्रेरी दैट यू ऑल नो. ठीक है, रेंजेस 1000 एंट्रीज इज देयर, 0 to 999. उसके बाद टोटल 12 कॉलम है. ठीक है. So what are those 12 columns? Rank, title, genre, description, director, actors, year, rating, votes, revenue, and meta score. Okay, I'll explain you all these columns in detail. तो आप यहाँ पे देखो 1000 इस तरीके से दिए हुए हैं. But here you can see 872 and 936. So what do you mean by this? So there is some missing values. There is some missing data is there. Okay. अगर मिसिंग नहीं रहता तो सब में 1000 रोज रहते हैं. ठीक है. एंड यू कैन सी द डेटा टाइप दैट यू आर एबल टू सी. सो देयर आर फ्लोट दैट कंसिस्ट ऑफ 3 कॉलम, इंटीजर के 4 कॉलम है, ऑब्जेक्ट के 5 कॉलम है. ओके, so we are checking what? Null values. So if is there any null values or no? So what we have used, data dot is null dot sum, that अगर हम लोग वो यूज करते हैं तो डायरेक्टली दे कैन गिव यू द null values. आपको आपने यूज किया था ना, data dot is null dot sum. So what it will give? It will give each and every column and there is null values present or not. So in revenue
and in Metascore there will be null value, so it will show you the remaining value. So what it is saying, data dot is null dot values dot any का मतलब क्या होता है, basically it will represent you if null values is present it will represent you true, if not present it will represent you false. Okay, तो हम लोगों ने इस तरीके से देख लिया। तो यहाँ पे आपको पता चला कि what null values is there. Okay, where that null values is present, so data dot is null dot sum, so null value is present in revenue. Okay, so how many null values are there? 128 and meta score में 64. If we wanted to see null values with respect to different charts, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हीट मैप। ओके, दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस नाउ। अगर हीट मैप आप कंस्ट्रक्ट करोगे तो आपको किसके बेसिस पे मिलेगा चीजें, लाइक जहां पे भी वेर एवर योर डेटा कंटेन्स नल वैल्यूज इट विल शो यू लाइन अकॉर्डिंगली। सो एसएनएस डॉट हीट मैप डेटा डॉट इज नल एंड पीएलटी डॉट शो हम लोगों ने किया, सो इट विल शो यू द null values where it is present revenue में and meta score. Okay, so it is showing you the null values which is present in your data. After that, I wanted to see how many percentage of like null value is present. मतलब क्या हो गया कि आपका डेटा अगर आपके 100 रोज है, ओके, सो हाउ मेनी नल वैल्यूज इज प्रेजेंट, सो मैंने बोला कि 15 नल वैल्यूज इज देयर, सो व्हाट इज द परसेंटेज, 15 by 100 into 100, so 15% your null values data is present. If we have considered like 120 rows है, उसमें 120 में 15 null values है, so what will be getting, जो भी परसेंटेज आपका निकल गया उसके बेसिस पे। ठीक है, तो समझ में आया, इस तरीके से हम लोग चीजें करेंगे। 50/4, सो समथिंग लाइक 12.5%, 12.5%. Okay, so 12.5% null values is present in this data set. So that's only we are using data dot is null dot sum into 100 by length of data. कितना आपका length है? There is 1000 rows. Okay, and what were the null values? आपके कितने null values थे? 128. So that's why it is like that. And in another one, how many? 64. So it was like that. I hope you understood up to this point. What we need to do? We need to drop all the missing value. So when you will learn machine learning technique, so there is some rule in machine learning technique. I'll tell you. If null values is present, okay, आप इसको नोट डाउन कहीं पे भी कर लीजिएगा, ठीक है। If null values is present, if it is less in number, if it is less in number, then okay, आपको पता है df dot drop and whatever the rows whatever the column you wanted to drop and in place equal to true, you have done it already. But if the data, if null values is presented more in number, तो आपको क्या करना पड़ेगा, you need to replace it, you need to replace it. If your null values in numerical in number numerical है, okay, so replace it with mean. ओके, ये आप लिख लो कहीं पे। अगर आपका कैटेगोरिकल है then replace it with mode. Okay, if in your null values outlier is present, if in your data if in your data outlier is present, so remove it by median. ये चीजें आप देख लीजिएगा। I hope you understood. So it is less in number, so we can drop it. Okay, understood or not? समझ में आया? नहीं आया क्या guys? Sir, can you repeat it once again, sir? Yes, like see, if in your data null values is present, null values means what? Empty values. Okay, then there is two condition. If it is less in number,
अगर आपके पास कम null values है, less null values is present, then you can directly drop it. Drop it means what? You can directly drop that rows. Okay. If null values is large in number, then replace it. And replace it why? How? If it null values is in numerical data, it means what? Your column is numerical data type. Then replace it with mean. Okay. If it is categorical, categorical means what? Text data. Then replace it with mode. Okay, if in your data outlier is present, outlier I have explained you earlier, then replace it with median. Understood? Yes, sir. So what we have done, we have dropped null values, x is equal to 0. So whatever the data that we are consisting, 838 rows ho gaya. Okay, and 12 columns. Okay, so is there any duplicate data is present or not? So data.duplicated.any. So here you can see there is no duplicate data is present. Okay, so we can see data shape is 1000 to 12, and after dropping it, it is 838 rows. Okay, now we wanted to describe it. Describe it with respect to what? Whatever the numerical column data is present. Okay, so here you can see revenue में 872 है and मेटा स्कोर में 936 है. ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा 1000 each and everywhere 1000 is present, but in revenue and meta score 872 and 936. Okay, now we are going to find out some of the question that is related to our project. So display the title of movie having runtime more than 180 minutes. 3 घंटे से ज्यादा का कोई मूवी है तो उसको आप क्या कर दो, रिप्रेजेंट करो. सो व्हाट वी हैव डन, सो इनिशियली व्हाट यू हैव टेकन डेटा डॉट कॉलम्स में आपके सारे कॉलम्स आ गए. व्हाट वी आर डूइंग, डेटा, डेटा के अंदर में रन टाइम वी हैव टेकन. ओके, रन टाइम इज देयर. ओके, रन टाइम इन मिनट्स. If it is more than 18, then show me the title. Display title only. So see, Wolf of the Wall Street, The Hateful Nine. These different types of movies are present, which consists of like runtime more than 180. और वो उसका इंडेक्स पोजीशन इज 82, 88, 311, 828, 965. Understood? In which year there was highest average voting? So voting हुआ था. Voting with the help of what? Votes के आपके कॉलम थे यहाँ पे. So you can see. So in which year there was highest average voting? So what we have there? We have used group by. So you will be studying this group by option in Power BI also. Okay, group by. So group by is what group by is used for. So if you want to group two columns together, if you want to group two columns together, we will be using group by. So what we have done, data dot group by year and votes we have taken, and mean what we average voting. So mean, and we have sorted it. Mean भी आए आपका तो sorting. Sorting means what? Ascending to descending, whatever the thing that you are trying to say. आपका sort ascending equal to false. मतलब क्या हो गया? Descending order में. Understood? Ascending equal to false. So mean ले लिया हमने, sort कर दिया values को, ascending equal to false means what? It is in descending order. So whosoever is having bigger rating, so it will give the top of that. तो year 2012 में आपका क्या था, like rating बहुत ज्यादा था. Okay, mean average rating. And in year 2016 it was less. Understood? Now we can plot with the help of bar. ठीक है, तो बार प्लॉट के हेल्प से हम लोग कर रहे हैं एसएनएस डॉट बार प्लॉट एक्स ईयर वाई वोट्स एंड डेटा, दैट डेटा वी आर कंसिस्टिंग ऑफ पीएलटी डॉट टाइटल एंड पीएलटी डॉट शो. तो ये आपको क्या शो करके दे रहा है, कौन से ईयर में ज्यादा वोटिंग हुआ. यू कैन सी 2012 में, सो इट इज शोइंग यू द बिगर डेटा विद रिस्पेक्ट टू दैट. ओके, सबसे कम किसमें हुआ, 2016 में. Okay, you can see with the help of this bar plot. Okay, in which year there was highest average revenue. Revenue कब ज्यादा हुआ? So year and revenue millions we have taken in out. Mean dot sort values ascending equal to false. So in 2009 आपका revenue क्या हुआ, सबसे ज्यादा हुआ 112. वो आपका millions में जो भी उसके perspective सबसे कम 2016 में. So in 2016 only
there was less voting as compared to that, and a revenue also less. Okay, now we have plotted it out with respect to that. So here you can see 2009 में आपका रेवेन्यू 112 था, बट रेटिंग आपका जो था वो सबसे ज्यादा किसका था, 2012 का. Here you can see. So with respect to like revenue, 2009 का आपका सबसे ज्यादा रेवेन्यू. आई होप यहाँ तक आप समझ में आ गया होगा. फाइंड द एवरेज रेटिंग फॉर ईच डायरेक्टर, हर एक डायरेक्टर का लाइक रेटिंग. So group by director and rating mean dot sort values ascending equal to false. So here you can see director नितेश तिवारी. इसको आप जानते हो, नितेश तिवारी को, दंगल मूवी का. Okay, so like Dangal movie has got more rating as compared to these all director. Okay, so I also don't know. Yes, Amir Khan को मैं जानता हूँ बस. Okay, so I don't know these all director, but Nitesh Tiwari top the list. Okay, because of the movie Dangal. Okay, now display top 10 lengthy movies टाइटल एंड रन टाइम. मतलब सबसे ज्यादा रन टाइम टॉप 10 के पर्सपेक्टिव से. आई एम नॉट सेइंग दैट more than 150 minutes or more than 160. I wanted to represent with respect to top 10. Okay, so what we have done, we have taken one variable, anything, data dot n largest. N largest means what, how, like whatever the top data you wanted to consider. So n largest, we want what, top 10. Runtime in minutes, we want what, title, and with respect to runtime minutes. Okay, हम लोगों ने क्या किया, इसको set index title के perspective से देखा, and then what we have done, snh dot bar plots runtime minutes and y में index को रख लिया and title show कर दिया. So you can see Grindhouse is top like top 5 and top 10 movie. So we have considered top 5 only, so it is showing it टॉप 10. नो 1 2 3 4 5 6, तो टॉप 10 यहाँ पे टॉप 10 होना चाहिए था. ओके, टॉप 10. Okay, so with respect to top 10, here you can it will be updated. Okay, so top 10 lengthy movie we have got with respect to runtime minutes. So display the number of movies per year, मतलब कौन से ईयर में सबसे ज्यादा मूवी like हुआ release. So we have used count plot in order for counting it. We can use bar plot also. ठीक है, तो काउंट प्लॉट हम लोगों ने किया ईयर एंड डेटा. सन 2016 में सबसे ज्यादा मूवीज रिलीज हुआ, बट यू कैन इमेजिन 2016 का रेटिंग बहुत कम था. ओके, 2009 का कलेक्शन मोर. ओके, रेटिंग इसका कम था. मोर मूवी रिलीज्ड इन 2016 only. So these are some of the data that you are consisting of. Now data dot year dot value counts. Dot value counts what it represent, whatever the year that it consists, उसमें कितने कितने movies release हुए, you can get with respect to value counts. So suppose in gender, male is there and female is there, you wanted to count how many male and how many female are there. So you can use what, any data type name df, you can use gender dot value counts. So it will show you what, how many males and how many females present in that data. So dot value counts is used for counting the number of items present in with respect to particular category. So 2016 में कितने डेटा है, यहाँ पे आपको काउंट प्लॉट के हेल्प से आपको डायरेक्ट डेटा नहीं मिल पा रहा था ना. देखिए यहाँ पे काउंट प्लॉट के हेल्प से it is nearly like 295 or something like that, but we have used dot value counts in order to see the exact data. Find most popular movies title and highest revenue. So हम लोगों ने क्या लिया, रेवेन्यू इन मिलियंस मैक्स इक्वल टू डेटा रेवेन्यू जिसका ज्यादा था. सो स्टार वॉर्स अभी तो लाइक इट हैज बीन अपडेटेड बाय अवतार, बट उस पर्सपेक्टिव में स्टार वॉर्स का एपिसोड 7 जो था, द फोर्स अवेकन, उसका सबसे ज्यादा रेवेन्यू हुआ था. ठीक है, डिस्प्ले टॉप 10 हाईएस्ट रेटेड मूवी टाइटल्स इन एंड डायरेक्टर. तो आपके डायरेक्टर के बेसिस पे सेम वी हैव यूज्ड टॉप 10 इंडेक्स. सो डार्क नाइट अराइजेस, और ये देखिए डार्क नाइट, ये आपका वो वाला डार्क नाइट देखा आपने, इंसेप्शन, दंगल, इंस्टेंटेलर एंड द प्रेस्टीज, Dark Knight Rises, these all I have seen. So with respect to that, highest rated movies Dark Knight Rises है. ठीक है,
रेटिंग के पर्सपेक्टिव से। सो डिस्प्ले टॉप 10 हाईएस्ट रेवेन्यू मूवीज, जिसका सबसे ज्यादा रेवेन्यू हुआ। सो व्हाट वी हैव देन, Star Wars, that I have already find it out. So Star Wars, then Avatar, then Jurassic World, something like that. These all are movies. Okay. Now we wanted to consist revenue in millions and we wanted to see with respect to this. Okay, chart के basis पे तो आपने क्या यूज किया, L largest that I am using continuously. आप देखो स्टार वॉर्स, अवतार, जुरासिक वर्ल्ड, these all are the movie. ये आपने आपको मिल गया यहाँ पे, बट वी वांटेड टू सी विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू चार्ट्स। ओके, फाइंड एवरेज रेटिंग ऑफ मूवीज ईयर वाइज आपको एवरेज मूवीज का रेटिंग चाहिए। तो यू हैव यूज्ड ग्रुप बाय ईयर एंड ये आपने सॉर्ट वैल्यूज किया, सेट इंडेक्स किया, तो हियर यू कैन सी 2007 में 7.13 रेटिंग, एवरेज वी आर कंसिस्टिंग। 2006 में 7.12, देखिए 2.16 में सबसे कम था रिव्यूज। ओके, if we wanted to see with respect to bar plot, you can see rating के perspective से तो 2016 में सबसे कम है। मैं चल रहा हूँ। Rating affect the revenue, we wanted to find it out. So आपने scatter plot लिया, rating and revenue ले लिया। So you might have considered कि rating अगर अच्छा है तो revenue आपका उसके accordingly ये है। तो आपको यहाँ पे क्या कंसीडर होके मिला, देखिए। सो इफ योर रेटिंग इज इंक्रीजिंग तो रेवेन्यू आपका क्या वही का वहीं पे रह गया है। सो इट हैज बीन कंसीडर लाइक सम ऑफ द मूवीज गॉट, अगर रेटिंग ज्यादा है तो उसका रेवेन्यू अच्छा हुआ है, बट मोस्ट ऑफ द मूवी इज सेम ओनली, रेटिंग बढ़ रहा है तो थोड़ा थोड़ा रेवेन्यू बढ़ रहा है। ओके, after that what we have, classify movies based on rating, like अगर रेटिंग 7 से ज्यादा है so we can consider it excellent, and if अगर 6 से कम है और बराबर है तो good, और else में average। okay, so we have consider one function हम लोग create कर सकते हैं। so we have added some other column, rating and apply rating। so यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे रेटिंग कैटेगरी एक्सीलेंट में आता है, व्हाई, बिकॉज इट्स स्कोर इज मोर देन 7.0। ओके, सो यहाँ पे आपका आ गया, तो सारे चीज बन के आ जाएंगे। सो काउंट द नंबर ऑफ एक्शन मूवीज, सो कितने एक्शन मूवी सबसे ज्यादा हुए हैं उसके बेसिस पे। सो व्हाट वी हैव डन, we have considered action, okay, and then we can consider that 303 action movies आपके बन के आए हैं, ठीक है। उसके बाद find the unique values from the gender, मतलब आपके किस किस टाइप के मूवीज आपको कंसिडर किए हुए हैं। तो यहाँ पे यू कैन सी actions, adventure, sci-fi, these all different types of movies that you are consisting of। ठीक है, अब what we wanted to see, we wanted to see unique item, like इसमें कौन कौन से टाइप different types के movies हैं। ठीक है, तो here you can see unique list we have made, action, sci-fi, mystery, horror, ये सारे चीज different। ठीक है, how many films of each genre were made, मतलब genre मतलब आप समझते ही हो कि क्या होता है। So if you wanted to consider, if you want to count, then आप count plot भी use कर सकते हो। Okay, and if you wanted to count with respect to any other library, then we can import counter option। Okay, ये आप यूज कर सकते हो, और यू if you don't want you can also not use। So if you wanted to count, so you can see from collection import counter, what we have done for values in data, list वन डॉट append, and then हम लोगों ने कंसीडर किया तो list वन का इस तरीके से वैल्यूज आया, एंड यू का यू ऑलरेडी नो ये कॉमा से क्यों हटाया गया है। ठीक है, एंड देन वी कैन फाइंड आउट दैट एक्शन के 303, एडवेंचर के 259, साईफाई के 120, ये हम लोगों ने देख लिया। सो इफ वी वांटेड टू काउंट विथ रिस्पेक्ट टू अदर थिंग, तो आप क्या यूज कर लेते, आप सोच के देखिए, डॉट वैल्यू काउंट्स, डॉट वैल्यू काउंट से आपको सेम डेटा मिल जाता। ओके, सो दीज आर ऑल द थिंग्स दैट वी हैव कंसीडर्ड इन दिस प्रोजेक्ट। सो काइंडली मैं इसका डेटा सेट आपको भेज दूंगा, you just practice after seeing the things, you can practice it out। okay, and when you will study about power bi and sql, तब हम लोग एक मेजर प्रोजेक्ट करेंगे जिसमें we will be using sql as well as power bi in order for connecting it। okay, हम लोग कनेक्ट किस तरीके से करते हैं मैं थोड़ा सा आपको दिखा दे रहा हूँ। we can connect with the help of like this। okay, sql connector की हेल्प से we can use लाइक दिस हम लोग कनेक्ट करते हैं। तो ये वेन एवर यू विल
whenever you will read about SQL, no, देन हम लोग उस समय में एक साथ में चीजों को करेंगे। सो आई होप आपको ये लाइक प्रोजेक्ट समझ में आया। समझ में आया क्या?